Even if you enter an engineering course, this will not leave you. All the maths you're learning is used in engineering. All right. Okay. So the table you need to memorize. This is the table that you need to memorize. Okay. So I will just write here. So this is your function. This is your domain, and this is your range. Okay. And when we write the range, we are writing the smallest angle. Okay. Which is we are referring to the principal value branch. So first function, easiest, y is equal to sine inverse x. Right? So we know the value of x always is between, and the principal value range is this. Then y is equal to cos inverse x, cos, and then the corresponding ranges. Third is y is equal to tan inverse x. So tan domain, you can have any value of all the real numbers are allowed, and the principal range is okay. Y is equal to secant inverse x. X is less than equal to -1, or x is greater than -1. Y belongs to, and but y cannot be equal to pi by 2. Okay, तो हमने and y is equal to cot रह गया सिर्फ, cot inverse x belongs to all real numbers, and y therefore belongs to pi, and you have to memorize this chart. अच्छा, of domain and range. Very important. ये तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये नोन है. द वैल्यू ऑफ साइन वाई, ये तो बेसिकली वही है ना, yes sir, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स. सो साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, पता है हमें. मतलब साइन वाई मतलब वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. एक्स की वैल्यू जो है, ये एक्स की वैल्यू ये तो फ्लक्चुएट करती है -1 और 1 के बीच में. I hope you know this, that sine value fluctuates between y is equal to sine theta. The maximum value sine can take is 1. The least value it can take is -1. Alternating current में भी बहुत यूज होता है. yes sir, Yes. And same is true for cos. Cos also does not go beyond 1 and does not go below -1. Tan can have any value. Tan of 2000 also exists. It can have any value. Only thing is that this value
which we are referring to is in the principal value branch, which is the smallest angle के बीच में all the real values are possible. Okay. Even if you find it hard to understand, you still need to memorize all of this. There is no choice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All these 6 have to be in your mind anytime. These are just like trigonometry formulas which you didn't know earlier, but after a while you were able to recall. क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, there may be questions of find the value of y, and a secant inverse is visible to you. So you should be able to recall the domain and range to solve some of the questions. Properties के question हो गए. And I will show you what type of questions you can expect. With the help of this 6 results, you should be able to solve, apart from graphical questions, you should be able to solve the numerical problems also. Let me give you an example. Okay. So let's say you have sine of pi by 3 minus sine inverse 1 by 2. Okay. This is an angle, we know that. Sine inverse angle ही तो होता है. Yes, sir. Okay. So sine of what angle is it? Pi by 6? Solved. देखो क्वेश्चन करना बहुत इजी है ये वाला. Let's say I give you a question. Cosecant, sec inverse minus root 2 plus cot inverse minus 1. Okay. This is an angle and this is also an angle. Now, where is secant inverse minus root 2? Now go to secant inverse. Secant inverse either can be secant, देखो secant inverse is reverse. मतलब अगर आप cos और sec की दुनिया में जाओगे, so cos x and secant x. So secant x is equal to 1 upon cos x. Notice that cos inverse x is between minus 1 and 1. But in secant inverse, x ये नहीं हो सकता, minus 1 to 1 में missing होता है. या तो वो x is less than minus 1 or x is less than. So if you draw a number line for cos inverse and secant inverse, if I draw a number line, this is the way you have to memorize it. कि जो my cos function, okay, so this is my origin, this is 1 and this is minus 1. Okay, so the plus 1 and minus 1. So my x in the case of cos is between minus 1 to 1. Can you see this? X is between minus 1 to 1. But go to secant inverse. X is less than, x is here, less than equal to 1. X is also here. But minus 1 to 1 is missing in secant inverse. So secant inverse का बनाना है तो ये होता है. लेकिन अगर cos inverse का बनाना है तो ये वाला पार्ट है. Let me use the other color for cos inverse. So cos inverse is this. The pink part is cos inverse and the black parts are secant inverse. So whatever values cos inverse x can acquire, secant inverse will have all other values except these values. So this part of the number line is missing for secant inverse. Secant inverse is the only on the left or right of cos inverse x. The dots represent the secant inverse. Tell me if this was easy to understand a bit.
हाँ, थोड़ा समझ तो आया। So let's repeat. हम्म Cos inverse x can only be between -1 to 1. हम्म x उसका जो डोमेन है, यस सर। राइट? सीकेंट इनवर्स का यहां से यहां तक अलाउड नहीं है। जो हम्म कॉस 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 इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यूज है वो -1 to 1 है। इफ यू नोटिस दिस, टू यस सर। टू में सीकेंट इनवर्स यही वैल्यूज नहीं ले सकता, बाकी सब ले सकता है। अच्छा। तो देखो, -1 to 1 में कुछ भी नहीं ले सकता सीकेंट इनवर्स। हम्म तो नंबर लाइन पे फिर चॉइस क्या बची? ये ओरिजिन है, हम्म 0 to 1 अलाउड नहीं है, यस सर। 0 to -1 भी अलाउड नहीं है। हम्म तो 1 के लेफ्ट पे जगह बची, हम्म -1 के, और प्लस यस सर। 1 के भी राइट पे ही जगह बची। तो सीकेंट इनवर्स की वैल्यूज देखो, एक्स की क्या है, सी द वैल्यूज। ठीक है। ये वाली, ये तो अलाउड ही नहीं ना इसको। यस सर। और एक 1 के आगे की वैल्यू बची, फिर ये वाली अलाउड हम्म नहीं, जहां मैं क्रॉस लगा रहा हूं उसको सिर्फ डॉट्स अलाउड है। हम्म So if you memorize cos inverse x, then you know in your mind this relationship, right? यस सर। So whatever values cos inverse x can have, जो x है उसका, वही वैल्यू secant inverse नहीं ले सकता, secant inverse का x। तो ये x है बेसिकली, राइट? सो डोमेन इज x। तो अभी हम डोमेन की बात कर रहे हैं, secant inverse और cos inverse x के डोमेन की। cos inverse x का डोमेन जो है वो -1 to 1 है। तो हम्म सीकेंट का जो डोमेन होगा वो ये नहीं हो सकता -1 to 1। तो एक नंबर लाइन के ऊपर अगर 1 से लेके -1 आपको अलाउड ही नहीं है, तो फिर आपको या तो 1 से बड़ा अलाउड है हम्म या -1 से छोटा अलाउड है। यस सर। नाउ रीड इट केयरफुली, फिफ्थ को ध्यान से पढ़ो। तो कॉस इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स आपस में लिंक्ड है। जो वैल्यूज कॉस इनवर्स ले सकता है वो सीकेंट इनवर्स एक्स नहीं ले सकता। डोमेन की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, हम्म राइट? अब बात करते हैं कॉस इनवर्स -1 to 1 है, तो किस रेंज में है वो? 0 to π। कल वी स्टडीड दिस, दैट द हम्म वैल्यूज ऑफ -1 in the case of a cosine graph appear like this. Okay, so this is 0 degree, cos is 1, and if the value touches pi, it becomes -1. The principal branch of a cos function is actually only this, 0 to π, हम्म cos फंक्शन के लिए। तो ये बेसिकली cos फंक्शन की तो ये डोमेन हो गई, क्योंकि वो cos फंक्शन है, बट वी आर डीलिंग विथ cos इनवर्स फंक्शन, उसमें रिवर्स हो जाता है डोमेन और रेंज। हम्म तो हमारा यहाँ पे जो x एक्सिस पे डोमेन था cos x का और y पे cos x था, अब उल्टा हो गया। अब x यहाँ पे है और cos इनवर्स x यहाँ पे है। तो ये जो है cos इनवर्स का जो रेंज आया वो 0 to π है, यही वाला 0 to π। तो इफ यू हैव टू राइट cos x का डोमेन कितना है, ओके, देन यू कैन से द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज फ्रॉम π to 0। cos x की बात कर रहा हूं अभी मैं। हाँ, और आप देखो जो cos x का डोमेन है, cos इनवर्स x में वो कहां नजर आ रहा है, किसके अंडर नजर आ रहा है?
सेम टू सेम रेंज बन गया वो वहां जाके। ये हमने कल पढ़ा था। यस सर। दे रिवर्स। अगर हमें याद हो कि cos x कहाँ पे होता है डोमेन, और उसकी रेंज कहाँ पे होती है, ये वाली मतलब ये y है इसका, तो इसकी रेंज होती है 1 to -1। हम्म लेकिन ये -1 to 1 cos इनवर्स में क्या कहलवाता है? रिवर्स हो जाता है सब कुछ। तो cos इनवर्स x में द डोमेन बिकम्स दिस एंड द रेंज बिकम्स दिस। रोल रिवर्सल। हम्म देख लो 2 में, देखो, लुक एट 2। 2's डोमेन इज व्हाट? cos x का डोमेन देखो और cos इनवर्स का देखो, उल्टे हो गए ना। हम्म जो cos x की रेंज थी वो cos इनवर्स x का डोमेन है अब। हम्म तो देर आर तो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम यूजिंग द नॉलेज ऑफ माई cos x डोमेन एंड रेंज and interchanging the domain and range of cos inverse x. Then I'm looking at cos inverse x and trying to find a rule कि secant inverse लिखना आसान हो जाए। जैसे कि पहले तो cos x का मुझे पता था, इंटरचेंज करके मुझे cos inverse x भी पता चल गया। फिर मैंने बोला यार cos inverse x can be -1 to 1, then secant inverse can be all the other values except -1 to 1। So मैंने याद कर लिया है कि अच्छा secant inverse जो है it will be all the values except -1 to 1। So I could establish the domain of secant inverse x being this side less than 1 and greater than 1। ठीक है। हाउ टू मेमोराइज, याद कैसे करें फिर? हम्म थोड़ा सा मतलब एक याद हो जाए। अगर जैसे cos x किसी को आता है, हम्म वो बोलेगा इंटरचेंज, तो cos इनवर्स आ जाएगा। यस सर। फिर उसको ये समझ में आ जाता है कि यार जो वैल्यूज cos इनवर्स x में x की हो सकती है वो secant की अलाउड नहीं है। सिर्फ इतना याद रख ले तो वो बाकी लिख सकता है ना फिर। यस सर। भाई अगर इफ cos इनवर्स x is from 1 to -1 to 1, then secant inverse x is on this side and this side, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता -1 to 1 के बीच में। तो x में फिर बचा क्या क्या? 1 to infinity and -1 to -infinity। लेफ्ट पे सब कुछ अलाउड है, राइट पे अलाउड है, ये बीच का हिस्सा मिसिंग है जो cos इनवर्स का हिस्सा है। बाकी सारा बैलेंस हिस्सा मैं secant इनवर्स x को दे रहा हूं। एक तरीका हो गया मेमोराइजेशन का। यस सर। ओके, सेम इज ट्रू फॉर, let's go to this sin inverse x. Now in the case of sin inverse x, how do I memorize this? तो मुझे ये पता है sin inverse x में कि if I draw the graph of sin x, it is like this। So this is 1 and this is -1। This is pi by 2, this is 0, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 0। And if I go on the other side, I should be able to get my -1 at minus pi by 2। So my principal branch actually for a sine is this one। उसकी सबसे और छोटी बड़ी इसी में कवर हो जाती है ना। सबसे छोटे यस एंगल सर। हमने कल बोला भी था यही थे। बाकी सारे एंगल जहाँ पे रिपीट होगा, जैसे कि अब यहाँ पे फिर रिपीट होगा, ये बड़े हो जाएंगे एंगल। 3 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 बड़ा हो जाएगा काफी। ये भी -1 to 1 ही है।
सर आपकी आवाज बड़ी अजीब सी हो गई। आपकी बड़ी अजीब सी आवाज आ रही है। आई थिंक वो अब ठीक है। अच्छा ठीक है ओके बेटर यस सर, अब ठीक okay. So you can see for yourself that sine x fluctuates from -1 to 1 when x is between pi by 2 to minus pi by 2, right? है। और y ये यस सर। this is y axis. So y sine x then fluctuates between so sine का पता चल गया हमें साइन इनवर्स का लिखना बहुत यस इजी सर। हो गया उल्टा कर दो दिस इज माय डोमेन एंड दिस इज माय रेंज नाउ आई नोट नॉर्मल साइन एक्स मुझे मालूम है दिस इज माय प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिस इज माय करस्पॉन्डिंग रेंज वो नाउ साइन इनवर्स एक्स में रेंज क्या हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स में अगर रेंज लिखनी है तो एक्स डोमेन विल बी दिस इंटरचेंज हो गया and the range will now be reversed. यस सर। थोड़ा सा थंब रूल टाइप का कोई रूल भी दिमाग में हो एंड थोड़ी सी मेमोरी में है आपकी तो यू कैन स्टिल एस्टैब्लिश समथिंग थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड में हो अगर कि क्या हो यस रहा सर। है नाउ वी नो कि ये साइन एक्स की हेल्प से वी आर एबल टू एस्टैब्लिश द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटरचेंज कर दिया रिमेंबर दिस इज साइन एक्स वाई बट यहां पे ये एक्स है और यहां पे जो डोमेन में एक्स लिखा हुआ है वो डोमेन में एक्स ही है ये साइन इनवर्स एक्स है सिर्फ क्योंकि ये एंगल हो गया अब एनी डाउट्स इन योर माइंड जस्ट वेट क्लियर है राइट ऑल राइट तो अब हम देखते हैं कि यार साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है -1 to 1 हो सकती है और साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 we have a problem of that cosecant x is equal to 1 upon sin x. So if x varies from minus pi by 2 to pi by 2, मतलब 0 भी included है यहाँ पे, we will have a problem. If x becomes equal to 0 for example, undefined आ जाएगा. Let's go to the chart and see कि how is cos inverse behaving. Okay, so if you look at cos inverse, identical. बिल्कुल सीकेंट जैसा ही है इट इज नॉट फ्रॉम -1 to 1 अलाउड ही नहीं है यस सर। दिस ऑल्सो इज अलाउड फ्रॉम on the left hand side of the -1 and on the right hand side of +1 and look at the values and I told you right 0 पे प्रॉब्लम है सिमिलरली cos में pi by 2 is a problem so excluded so if you know the domain of sin x you can find the domain of cosecant inverse x and obviously range तो interchange हो ही गई
वहां पे ये रेंज थी -1 to 1 साइन में। यस अब सर। वो यहाँ पे वो बन गई, जो रेंज है वो ये आ गई। बट ये अलाउड नहीं, एक एंगल अलाउड नहीं है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है। The rule is how whatever way the cos inverse x behaves, sine inverse x also behaves in a different manner. But we have to be very careful that in the case of cos inverse x, we know cos x does not secant x is equal to 1 upon cos x. So if x becomes equal to pi by 2, secant inverse की कोई वैल्यू नहीं आएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो एक एक्स्ट्रा 0 to π इज फाइन, क्योंकि इंटरचेंज से पता चल गया। यस सर। बट दिस इज नॉट अलाउड, एक बीच में वैल्यू है जो अलाउड नहीं है। उसी तरह साइन इनवर्स एक्स में, कोसिकेंट इनवर्स एक्स में, कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, तो वन वैल्यू इज नॉट अलाउड, वन वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक है। So not that we are getting great clarity, too much clarity, but we are getting some logic built in our mind कि अगर हमें याद करना तो याद कैसे करें? How do you memorize this then? By discussion, right? By discussion, looking at it, discussing कि साइन कैसा होता है, फिर साइन से कोसिकेंट आ गया, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का इंटरचेंज हो गया, फिर बोला अच्छा हाँ, साइन एक्स और कॉस एक्स का सेम ही होता था बिहेवियर एक्स का, और वो है सेम। You can see Yes, 4 sir. and 5. The secant inverse x and cosecant inverse x behave identically. But you know the principal value ranges. In the case of cos, it was 0 to π, smallest angles, where it fluctuates between -1 to 1. But in the case of sine, the fluctuation from -1 to 1 happens from -π by 2 to +π by 2. Agreed. ये भी हमने पढ़ा, अभी देखा हमने साइन के ग्राफ में। कॉस के ग्राफ में वही बात जो थी, इट वाज डिफरेंट। Yes, sir. Look at the cos graph. 1 appears at 0 and -1 appears at π. ठीक है। And in the case of sine, the same situation happens on this principal branch. This one. ठीक है। धीरे धीरे बातचीत करने से आई एम श्योर यू विल मेमोराइज हो जाएगा। यार जो साइन का बिहेवियर है वो -π/2 to π/2 है, और कॉस का जो बिहेवियर है वो 0 to π में -1 और 1 के बीच में आती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस भी अगर याद हो जाएं दोनों की, तो डोमेन तो मालूम ही है, -1 to 1 होता ही है Yes, साइन sir. एक्स और कॉस एक्स का, और उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस भी पता चल गई। फिर इनको इंटरचेंज कर दोगे तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा। और ये भी पता है यार, साइन एक्स में कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स में, इफ आई पुट एक्स इक्वल टू 0 विच इज दिस, इट्स अ प्रॉब्लम कोसिकेंट में। तो व्हेन आई डू द इंटर कन्वर्जन ऑफ द डोमेन एंड रेंज, I will eliminate one of the range कि y is not equal to 0, although y is between π/2 and -π/2, but y cannot be 0. I hope this is helping you Yes, sir. and you're getting connected to the topic. पहले थोड़ा disconnection हो जाता ना, because समझ नहीं आता तो। Yes, sir. Then you have in your mind, okay, I read about cos. Cos की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पे। अच्छा, -1 कहाँ पे होती है? अच्छा जी, पाई पे। अच्छा, तो इसका मतलब -1 to 1 फ्लक्चुएशन है 0 to π। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है cos x की, वो है 0 to π, और इसकी जो वो है डोमेन, वो है 0 to π। When x is from 0 to π, cos fluctuates from +1 to -1. Yes, sir. Then I will interchange now for cos inverse x.
But I will say, यार, there is a value of cos x at pi by 2, where secant inverse, if I try to calculate it at x is equal to pi by 2, is a problem. Yes, sir. इन्फिनिटी हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा. तो जब मैं इंटरचेंज करके रेंज लिखूंगा y is from 0 to pi, I will remove one of the angles which is pi by 2. Okay. In the case of cosecant inverse, I will remove this, and in the case of cos x, I will remove this. इंटरचेंज करने के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप, विच एंगल, तो वो एंगल वहां तो पॉसिबल थे. देखो, when you wrote sin inverse x, there was no elimination. They were first class ना. कोई आगे कुछ लिखा हुआ है कि this is not possible, this is possible? Nothing is written. cos inverse में देखो कुछ लिखा है, don't include this angle, कुछ नहीं लिखा हुआ. नहीं. बट cos inverse और secant inverse x में लिखा है. But how will you memorize it? You will say, okay, so if I draw the graph, at one point I will have a problem. Right? Yes, sir. Okay, let's move to 10 now. I hope this is helping you. Yes, sir. Come close to the topic and you're feeling connected now. Few questions and you will feel confident. Yes. Graphical question. आता है graphical question. Domain range का question भी आएगा. Most of the students will find it so hard that they will leave this topic. But यही आएगा क्योंकि ये hard है ना थोड़ा सा. Yes, sir. तो यही क्वेश्चन होगा. ग्राफ बनाना भी आ सकता है. डोमेन रेंज, सारे ग्राफ एक जैसे बना दिए लेकिन डोमेन रेंज में थोड़ा इधर उधर कर दिया. तो अगर आपको मेमोराइज्ड है कि y इज नॉट इक्वल टू 0 है एक्स्ट्रा, वो गायब होगा एक के अंदर. तो दो चॉइसेस रह जाएंगी. एक में y इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 मिसिंग होगा चॉइस में. एक में y इज नॉट इक्वल टू 0 होगा. cos इनवर्स x की बात कर रहा हूं मैं, कोसेकेंट इनवर्स की. तो यू विल गो फॉर द सेकंड चॉइस. ठीक है. Correct? I'll show you the questions. जैसे they ask you graphical questions. Now let's go to 10. Again, my logic, the way I learned it was, first I always worry about कि tan x का क्या behavior है, okay? क्योंकि मैं उसी से जाऊंगा ना inverse करने. Yes, sir. Now I know यार, x can have any value. In case of tan x, if I worry about domain and range, नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं. नॉर्मल tan x में x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. Yes, sir. Okay, and so I can take any value. All real numbers are allowed to me, and my range is also known to me. Then I can get any value, which means I can get any value from tan x. कहीं से कहीं तक भी हो सकता है वो. ठीक है. When I put the values of x here, so x can take any value, which means the domain can be any value. Obviously real numbers, complex number नहीं डालना है यहाँ पे. You can put x can be minus 10,000, x Yes, sir. can be 10,000 pi, minus 10,000 pi, minus 22, कुछ भी डाल दो. You will find something. So x is allowed. But when we talk about this, first we have to worry about here, then for all the values of x which exist, जैसे कि cos के अंदर the values could only be these, right? But in the case of tan, there is no limitation on x. इससे और इसके बीच में ही रहेगा. It can be from plus infinity to minus infinity. Yes, sir. But then in the case of cos, the principal value branch was 0 to pi. And in the case of sin, it was सबसे छोटी वाली. तो वो सबसे छोटी वाली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan की क्या होती है? tan की जो वैल्यूज हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल के अंदर अंदर ही सारी दिख जाएंगी आपको. और वो वैल्यूज क्या है रेंज की?
द वैल्यू ऑफ y मतलब will be if you only see between minus pi to pi by 2, इसी के अंदर आप tan x को मतलब x की कोई भी वैल्यू ले लो, वो इसमें एग्जिस्ट करेगी. अच्छा. सो द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, सॉरी इसमें तो उल्टा लिखना है हमें, हम तो उसका लिख रहे हैं, रुको. सो यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ so range जो होती है इसकी कुछ भी हो सकती है. tan कैन हैव एनी वैल्यू, बट यस सर. वो जो एनी वैल्यू है उसका जो स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल डोमेन है, okay? जहां आपको ऑल सारी वैल्यूज मिल जाएंगी. इफ यू जस्ट टेक फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, you will find all the tan you can think of. हम बोल रहे हैं ना tan x, यस सर. x can have any value, so you can see this behavior of x. You want to see all the values of the tan in the world, you can see all those values just by moving x from minus pi by 2 to pi by 2. So this is your normal tan. ये रेडियंस में x है, ये करस्पॉन्डिंगली tan की वैल्यूज है. सो यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ y, तो कुछ भी आ सकता है. हाँ. y कैन बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. यस और ये बिहेवियर जो y का है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यू कैन सी इन अ वेरी स्मॉल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में अगर आप x ले लोगे, तो यू कैन सी दैट tan x which is y is taking infinite values. इतनी सी में ही नजर आ जाएगा. रिपीट तो होगा ही, जैसे sin x आगे जाके रिपीट होता है, cos x भी रिपीट होता है. तो लेकिन हमने cos x की ब्रांच ली 0 टू पाई, sin x की ब्रांच ली माइनस पाई बाय 2 टू. तो वो बिहेवियर जो था माइनस 1 टू 1 का, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने sin x और cos x की ढूंढ ली. अब हम ढूंढ रहे हैं कि यार अच्छा tan x तो माइनस 1 टू 1 के बीच में टिकता नहीं है, इट कैन बी फ्रॉम एनी वैल्यू टू एनी वैल्यू. तो फिर वो x जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसकी, वो कौन सी है जिसमें ये सारा बिहेवियर नजर आ जाएगा. साइन का बिहेवियर माइनस 1 टू 1 का हमें दिख गया था माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में. cos x का बिहेवियर which is minus 1 to 1 domain, sorry range, with the corresponding domain of 0 to pi. So 0 to pi में we were able to see complete behavior of cos x from minus 1 to 1. cos x का behavior 0 to pi में y becomes minus 1 to 1. यस सर. तो हमने बोला यार फिर tan x का ये जो behavior है, it can have any value. वो कौन सी सबसे छोटी एंगल्स हैं जिसमें we can see the behavior of tan taking all the values from a plus infinity to minus infinity. So that behavior is from minus pi by 2 to pi, and yesterday we saw that this is that behavior. So y can take any value and go towards infinity, but the behavior is seen from towards pi by 2, and on the other side it is towards minus pi by 2. And this behavior will repeat. So you will see another graph here थोड़ी देर के बाद. So there is a period, जैसे कि साइन में there is a periodicity, it repeats. 0 1 minus 1 1 दोबारा आएंगे, cos में भी minus 1 और plus 1 दोबारा आएंगे. उसी तरह tan में भी 0 to r सिर्फ माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस है, लेकिन उनका नंबर बड़ा हो जाएगा एंगल्स का. इसलिए हम तो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो सबसे छोटे दो रेंज है उसकी वरी कर रहे हैं. दैट्स ऑल. सबसे छोटे डोमेन की, सॉरी, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो हमें दिख गया यार कि cos x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 टू पाई,
साइन एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 टू π/2, और tan एक्स की भी -π/2 टू π/2 है, हम्म, आइडेंटिकल। yes sir. बैठ रहा है दिमाग में? बेटर. क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स? साइन एक्स की रेंज थी -π/2 to π/2. रेंज साइन एक्स, वाई मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ साइन एक्स। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स, नॉट साइन इनवर्स एक्स। साइन एक्स का रेंज, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ साइन एक्स, ये वाई होता है, मतलब साइन एक्स, और ये एक्स होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे है ना, yes sir. तो ये रेंज तो ये हुई ना, ये यहां तक गया और यहां तक गया, तो रेंज क्या हुई साइन एक्स की? उस साइड बनाया था ना हमने, द रेंज इज 1 to -1। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है. साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो साइन एक्स जो -1 to 1 है रेंज में, उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन क्या होता है? एक्स की कौन सी वैल्यूज, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जिसमें साइन एक्स फ्लक्चुएट करता है -1 to 1, हम्म, कौन सी है वो? साइन एक्स की. -π/2 टू π/2 में अगर x जो है π/2 से लेके -π/2 हो, तो साइन एक्स फ्लक्चुएट करता है 1 से लेके -1 के बीच। -1. ये तो पता था। हम्म, ओके, व्हाट इज द डोमेन ऑफ cos x? मतलब x की वैल्यू जो नॉर्मल y वर्सेस x, yes sir. नॉर्मल ग्राफ ऑफ cos नॉर्मल, व्हाट इज द डोमेन ऑफ cos x, माने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos x। कहां स्टडी करते हैं हम cos को? All real numbers. आई थिंक इट वाज 0 to π। x की वैल्यू 0 to π में स्टडी करते हैं, और cos x रियल नंबर्स नहीं होते सारे, -1 to 1 होते हैं। अच्छा. हाउ कैन cos हैव एनी नंबर? हैव यू सीन cos x इज इक्वल टू 2? आई हैव ओनली सीन cos x फ्रॉम -1 to 1, इससे ऊपर जाता ही नहीं है। हम्म, ऑल रियल नंबर्स तो सिर्फ आता है tan में। अच्छा. ओके, लेट मी आस्क यू अगेन, लेट मी गिव यू अ, लेट्स से आई गिव यू अ, for helping you to memorize it, okay? हम्म, So the idea is that I will help you to memorize it। अभी भी आपके दिमाग में बैठा ही नहीं है पूरा। लेट मी आस्क यू दिस, unless you fill it up yourself with your hand, you cannot memorize it। आपको लिखना पड़ेगा ये। If you write it down with your hand, is when you will is are you likely to remember it? Otherwise, it is not that it is impossible। नया नया if it starts, it is hard, थोड़ा मुश्किल होता है ये। So nothing,
So I'm giving you a small quiz that you try attempt it. Quiz मतलब fill in the blanks ही कह लो. ये जो chart बनाया हमने, try and write it yourself from your memory. Because वो लिखने से, हाथ से लिखने में you will be able to understand. So I will tell you randomly which you need to write, okay? And then you try and write it. एक नंबर के लिए देखो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं. Yes. One marker. Can you read that? Hmm. Just a bloody one marker and don't look at any आंसर. मतलब वो बिना रेफर करे हुए ट्राई करना. ठीक है? नो हेल्प. देख, अभी पढ़ना है, पढ़ लो. अच्छा, ठीक है. See the chart if you want to. Once you memorize it, you will be very confident. Then I will show you JEE questions and all. You yourself will say, yeah, I can easily do them because I know the concept. देख लो आराम से. Have a look at it. देख लिया? देख लिया? Yes, sir. Okay. We will move to the next page. Try and vomit it from your memory now, using your own logic. Just remember, साइन और cos x की वैल्यू कभी भी -1 और 1 से ऊपर नहीं जाती. और सिर्फ tan ही है जो सारे वैल्यूज ले सकता है. ठीक है. So we are moving to the next page. Add page, and this is your fill in the blanks quiz. Okay. दिख रही है? All right. So the first function is which you have to fill is cos x. The function is cos x. ठीक है.
Excellent. Now you're writing the principal value branch. Very nice. Just be very careful that you're writing the square bracket you're writing. ठीक है. Which means -1 and 1 are included. Included. ठीक है. Next. Cosecant inverse x. Yes, sir. Okay, let me see what have you done. So you have okay. Sine cannot exist at 0 degree. सही है. इन्हें इसको ऐसे नहीं लिखते, कॉमा लगा के लिखते हैं. y cannot be 0. Comma, comma, comma. Okay, so what was your logic of writing cosecant x domain to be -1 to 1? Just remember in inverse functions. Okay, so ये किसका इनवर्स है? Cosec का. हाँ, मतलब ये साइन से इंस्पायर्ड है. ये एंगल है, राइट? So this is basically angle of cosec. Yes, sir. Now the domain, so it's a angle of basically ये inspired है. If I say sin x से inspired है, so sin x से अगर sin x के बारे में हम सोचना शुरू कर दें, तो sin x जो है उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1. हाँ, करेक्ट है. और साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? साइन -1 to इनवर्स 1 x है. included. -1 to 1 included. हाँ, तो कोसेकेंट इनवर्स में क्या लॉजिक होता है कंपेयर टू साइन इनवर्स x, कि वो वैल्यू इंक्लूड करना मना है, -1 to 1, हाँ, नहीं करी. राइट? सो व्हाट विल यू राइट हियर? x को is bracket less than minus. equal to -1 लेफ्ट साइड पे, and x is greater than 1. You have written for sine inverse x, if you see very carefully the domain. You said ना sine inverse x का domain ये है, तो ये छोड़ के बाकी सब कुछ कोसिकेंट का हुआ ना. फिर नहीं समझ में आया? हाँ, समझ गया. ठीक करो इसको. इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू. सही है. यस. सो अब यू राइटिंग x, दिस इज x एंड दिस इज y. अब y एक्सिस पे ये एंगल आ गया, x एक्सिस पे वैल्यूज आ गई. यस सर. नॉर्मली x एक्सिस पे एंगल्स होते हैं. जब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स की बात होती है तो एंगल ऐसे बनाते हैं ना, 0, π/2, π/3, और फिर उसकी वैल्यू y पे लिखते हैं. यहाँ उल्टा है. यस सर. यहाँ पे जो डोमेन है एक्स एक्सिस, वहां वैल्यूज आ गई हैं और रेंज में एंगल आ रहे हैं. मेक सेंस? यस सर. ओके. नाउ राइट फॉर 10x. ओके, डू वन मोर थिंग. Draw the graph of cos inverse x. यहाँ पे ग्राफ बनाओ. So this is your, make a small graph of cos x in this box. Only for the
show the behavior of y versus x in the principal value branch. Hmm. So your principal value branch is this y. So now you know कि y जो है यहाँ पे ये वाला y है, ये y है. हाँ बिल्कुल सही. -1 to 1 और बहुत बढ़िया. तो mark that point pi/2. Okay, so you saying cos inverse x में my behavior is studied from 0 to pi. I'm on the x-axis from -1 to 1. Yes, सही बनाया. वेरी गुड. Yes. बढ़िया. वो वाला पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है? pi/2 वाला. वहां पे x 0 होता है और 0 आ रहा है. So इसके जो zero है. कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले, इस पॉइंट हाँ. के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बात करूं तो दे आर 0, 0, pi/2. pi/2. हाँ. बढ़िया बढ़िया. थर्ड, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ 10x. इसको और पतला कर. ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मल. 10x नॉट 10 अच्छा, इनवर्स. tan inverse. नो, आई एम इंश्योरिंग कि आपको 10 वाले भी पता हो. Hmm. If they tell you domain and principal value range, sorry, principal value branch, then principal value branch is the range. Hmm. So tan can acquire any value, Hmm. and x can also take all the real values. x तो कोई भी एंगल हो सकता है ना. हाँ. Yes, sir. x so जैसे कि वो -1 to 1 होते हैं, Hmm. जो x होते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, या कह लो जो
अगर मैं बात करूं साइन एक्स और कॉस एक्स की, तो साइन एक्स और कॉस एक्स की जो डोमेन है वो हम पढ़ते कहां से कहां तक है? हम्म साइन साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन कहां से कहां तक पढ़ते हैं? प्रिंसिपल नॉर्मल साइन एक्स और कॉस एक्स का पढ़ते हैं 0 to पाई, करेक्ट। और साइन एक्स का पढ़ते हैं -π/2 to पाई। हम्म तो इसी एक्स के अंदर वी कैन सी द बिहेवियर ऑफ साइन एक्स फ्रॉम -1 to 1, एंड हाँ। इसी 0 to पाई के अंदर वी सी द बिहेवियर ऑफ cos x फ्रॉम -1 to 1। हम्म तो हम बिहेवियर ऑफ tan x विच इज -∞ to ∞, वो टेंडिंग टू जा रहा होता है ना ऐसे, तो हाँ, tan करेक्ट। x का बिहेवियर -∞ to ∞ हम किस x के अंदर देख पाते हैं? वॉट कैन सो, एंड रिमेंबर नॉर्मल केस में एक्स आर एंगल, इनवर्स में एंगल यहां शिफ्ट हो जाते हैं, यस सर। लेकिन tan x में एंगल यहीं रहेंगे। सो अभी हमने पढ़ा था कि एंगल्स आर, बिल्कुल साइन वाला आंसर है। साइन का बिहेवियर भी -π/2 to π/2 स्टडी होता है। अच्छा। अभी पढ़ा था ना हमने हाँ। कि जो साइन का बिहेवियर है, फिर ड्रॉ दिस, दिस बिहेवियर ऑफ साइन वाज स्टडीड लाइक दिस। हम्म सो ये था +1, ये था -1। So you could study the behavior of -1 to 1 from -π/2 to +π/2, and same is true for the behavior of values of tan x approaching -∞ to ∞। इतना बड़ा behavior can be seen in a very small range, same as sin। So tan का जो behavior है, y tends to π/2, sorry, x tends to π/2, and on the other side x tends to -π/2, and y is tending to infinity. So you can see any value of y which you have mentioned. I can see values of y which is tan x. x is a dependent variable, x is independent, लेकिन आपको सबसे छोटा वाला x लिखना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओनली फ्रॉम -π/2 π/2 में यू कैन सी दिस बिहेवियर। ठीक है। Okay? Now write for tan inverse x using this knowledge। अब आपको पता चल गया tan x का कैसे बिहेवियर है। tan x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जिसमें वो बिहेवियर दिखाता है -∞ to ∞ का, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब जो x की वैल्यूज हैं वो -π/2 to π/2 है। अब यही यूज करके tan इनवर्स x की लिख दो। इंटरचेंज मतलब, so your y is equal to tan inverse x now, so interchange। जो tan की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, वो अब ये बन गई यस, और वो जो वैल्यूज हैं -π/2 टू +π/2, वो क्या बन गया? अब रेंज -π/2। बन गई। हाँ, क्योंकि वी वर एबल टू सी द बिहेवियर ऑफ tan x फ्रॉम -∞ to ∞ बिटवीन π/2 एंड ये, मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, सॉरी, आई जस्ट रब दिस, आई विल राइट इट स्मॉल। तो हमने देखा कि अगर tan -∞ to ∞ फ्लक्चुएट करता है, तो ये फ्लक्चुएट करता है जब x इज बिटवीन π/2 to -π/2। तो इंटरचेंज कर दो, ये यहां पे आ जाएगा। यस सर। ठीक है। इंटरचेंज हो गया ना। सो योर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इज -π/2 to π/2, समझ गया। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर tan इनवर्स x। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू थोड़ा थोड़ा। यस सर।
ठीक है, एक बार एक, यू कांट मेमोराइज इट इन वन गो, बट यू कैन मेमोराइज इट. ऐसा भी नहीं है कि यू कांट मेमोराइज इट एट ऑल. Yes, sir. ठीक है. सो कंटिन्यू टू मेमोराइज इट टिल यू गेट इट. दैट्स अ लेसन. याद करना है. Okay. डोमेन रेंज, यू डोंट हैव अ चॉइस. Hmm. जितनी मैं स्पून फीडिंग कर सकता था, समझा सकता था, आई हैव टॉट यू. ठीक है. प्लीज गो बैक एंड मेक योर कॉपी एंड राइट इन इट. ये तो मुझे याद करना है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में यू विल गेट स्ट्रक इन derivatives, you will get stuck in integration, you will get stuck in definite integration, you may Hmm. get stuck in differential equations if you don't know this. ठीक है सर. So ये करना जरूरी है. Let's move to another topic. Let's practice some questions based on the knowledge we have acquired. छोटे छोटे questions, right? ठीक है. So let's say I ask you, please tell me the value of. So question is, find the value. Yes, sir. You're free to refer to the chart, कोई problem नहीं. ये ज़्यादा easy है बहुत. Find the value. So I'm going to give you some question which is, I can cook it up. So cos inverse 1 by root 2 plus tan inverse 1. Done? Not done? I think you're on mute. नहीं हुआ सर. So what is cos inverse 1 by root 2? It's an angle. कहाँ पे होता है 1 by root 2 cos? Y is equal to cos x.
So cos x is coming out to be 1 by root 2. तो कौन सा एंगल होता है वो? cos माइन 45 डिग्रीज. नहीं इनवर्स में हाँ, तो एंगल ही तो होता है इनवर्स. y is equal to cos x. Cos x is equal to 1 by root 2. What is the angle at which cos x is 1 by root 2? ये है ना, angle is this. cos Cos x में तो inverse यही है. 45 डिग्री. When अच्छा is समझ गया अच्छा उल्टा यार. 45 tan inverse 1 कहाँ पे होता है? अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया ठीक है. Tan inverse 1 is again 45 हम्म minus 1. Sorry, cos minus 90 1 है. होगा. Sorry. So I will write it as maybe 135. ठीक है. Second quadrant. हम्म कितना हो गया? Cos of 180. हम्म -1 ठीक है. Next, let me give you another. Y is equal to um, cos inverse minus root 3 by 2 plus sine inverse 1 by 2. Find the value of y. Cos inverse minus root 3 by 2. So you have taken cos. Second quadrant हो गया. सही है. So cos of 150 is cos 90 plus 60. सही है. बढ़िया. Excellent. बहुत अच्छे. Okay. Now the shocker. Okay. Find the domain of sine inverse 2x square minus 1. You know the domain of sine inverse x क्या होता है ना? हम्म Use your memorization. Sine inverse x का domain. X can fluctuate from -1 to 1. 1 That's your domain. लेकिन आपको बोल रहे हैं find the domain of sine inverse this. मतलब इसके अंदर जो x है वो कौन सी वैल्यूज ले सकता है? यही होता है ना डोमेन इनवर्स में, तो अंदर वाला. यस सर. Now, same tricks. Irrespective of what you write inside, sine can never exceed the sine inverse 2x square minus 1 for the ये जो चीज है अंदर,
This can never go beyond one minus 1 and 1. कुछ भी लिख लो. Yes, sir. Sure. Okay. ठीक है. So you're getting x square less than equal to 1, right? So x square minus 1 less than equal to 1. So x plus 1 into x minus 1 less than 1. या तो Yes, ये sir. पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा. So x plus 1 less than 0, x minus 1 greater than 0. So this will become x less than minus 1 and this will become x greater than 1. कुछ भी Yes, sir. आंसर नहीं आया. उल्टा कर लेते हैं. अब x plus 1 is greater than 0 and x minus 1 is less than 0. So the answer is minus 1 to 1 आ गया. ठीक है. Last but not the least, find the domain again, but this time of for y is equal to tan inverse under root of x square minus 1. You can go back to your chart and see tan inverse के जो अंदर लिखा होता है वो क्या क्या हो सकता है. I think it can be any real number. अगर हम बात करें उसकी tan All inverse real x, numbers are. हाँ. कहीं हमने चार्ट बनाया हुआ है ना, वो पेज नंबर 1 पे. All real number are minus infinity to infinity. So this can also be from minus infinity to Infinity. infinity. ठीक है. If you see the question, how do you write it is more important. So x square minus 1 will be between, Infinity to minus infinity. कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 इधर ले जाओ. What changes? कुछ नहीं. Nothing. So we will continue to practice these. Okay. थोड़ा ये शुरू का थोड़ा सा टास्क है, थोड़ा सा अपहिल, but थोड़े टाइम में this will become very simple, like any other chapter. ठीक है. इसमें मतलब you can see the थोड़ा याद करना, थोड़ा सा डोमेन रेंज, एंड देन यू कैन कंट्रोल इट. फिर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, 2-4 क्वेश्चन हर टाइप के, एंड यू कैन इजीली. सो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ वी कैन टेक टुडे. और कुछ नया स्टार्ट करने का कोई मेक्स नो सेंस, है ना. तो आई थिंक जस्ट वांटेड टू रीडू दैट डोमेन रेंज. नाउ यू हैव इफ नॉट 50% आइडिया. मेमोराइज कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, दैट्स योर 50%. NCERT में it is very nicely written. Just read the theory of NCERT. चाहिए तो even if you read the theory and 1 month solved example जो नीचे दे रखा है, you will get a very good grip. तो मैं am not giving you any work to do except go back and read the theory again. Memorize this chart. Then life is easy ना. फिर हम बार-बार रेफर नहीं करना पड़ेगा, हमें पता होगा. Yes, sir. Can do very easily. Okay, sir. See you in the evening then. Bye. I've sent you 3 assignments of maths. I think you've seen them.